Hi everyone, and thank you so much for watching my channel, The Witty Turtle. So today we are going to start with section 29 and section 30 of your chapter PGBP, that is your profits and gains of business and profession, right? So in the last class we have already completed section 28, right, which shows which all incomes are taxable under the head PGBP, right? So section 29 क्या बोलता है? It says that how to calculate your PGBP, राइट? PGBP का जो इनकम होता है वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये सेक्शन में सिंपली उसने ये बोल के छोड़ दिया है कि यू हैव टू कैलकुलेट PGBP by keeping in mind all the provisions mentioned in section 30 to section 43D. सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 43D के बीच में जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो सबको आपको ध्यान में रखते हुए PGBP कैलकुलेट करना होगा, right? So now we will start with section 30. So in the last class only I have already told you that all the deductions, all your expenditures which are allowed under your PGBP are mentioned between section 30 to section 37, right? So today we will start with section 30. So section 30 में ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? इट इज़ अबाउट द बिल्डिंग, राइट? आपका कोई भी बिजनेस आप रन कर रहे हो, सो ऑब्वियसली यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट, even if you are owning it or if you have taken it as a rent, but you still have infrastructure involved in your business, right? So वही जो बिल्डिंग है आपके पास, for that building what all expenses are allowed, and it is different for owners and it is different for tenants, right? So that we will study now. We will study about 5 things. The first one is rent, the second one is rates and taxes, the third one is insurance, and the fourth one is your current repairs, and the last one is your capital repairs. Okay, so now you must be thinking what is rent and what is rates. So bahar ke countries mein taxes is known as your rates only. So rates and taxes are taken together. Now first we will understand about rent. So rent, who needs to pay the rent? The owner needs to pay the rent? No, the tenant needs to pay the rent. So when we are calculating the PGBP of owner, like बिल्डिंग का जो ओनर है उसका अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इफ़ यू आर ओनिंग दैट, इफ़ यू आर द ओनर ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इन दैट केस क्या होगा? अलाउड होगा या डिसअलाउड होगा? Disallowed होगा, allowed नहीं होगा, right? Because obviously you don't have to pay the rent, but in case of a tenant the rent is allowed. Next is what? Next is your rates and taxes. Rates and taxes is allowed both for owner and tenant. क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली आप जो रेट्स एंड टैक्सेस है, बोथ ओनर एंड टेनेंट बोथ हैज़ टू पे दैट, सो फॉर दैट रीजन इट इज़ अलाउड. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. यू कैन मेक इंश्योरेंस ऑफ एनीथिंग, राइट? So that is why it is allowed both for owner as well as for tenant. Now the next is what? Current repair and और revenue repair हम लोग जिसको बोलते हैं. तो revenue repair क्या हो गया? रेवेन्यू रिपेयर, सपोज यहाँ पे ये वाला हैंडल अगर टूट गया और मैं इसको यहाँ पे रिपेयर कराऊंगी, सो दैट इज नोन एज योर रेवेन्यू रिपेयर. बट व्हाट इज कैपिटल रिपेयर? कैपिटल रिपेयर, अगर ये छत पूरा टूट गया और इसको अगर हमें रिपेयर कराना पड़ रहा है, देन दैट इज नोन एज योर कैपिटल रिपेयर. रेवेन्यू रिपेयर विच इज डन फॉर short period, and capital repair is what? Capital repair which has its effect for more than like 1 or 2 years, right? सो जो करंट रिपेयर और रेवेन्यू रिपेयर होता है, दैट इज अलाउेबल फॉर बोथ ओनर एज वेल एज फॉर टेनेंट. नाउ व्हाट इज कैपिटल रिपेयर? मैंने बोला था अगर ये छत टूट गया तो उसको रिपेयर करने का बोलते हैं अपन कैपिटल रिपेयर. सो कैपिटल रिपेयर इज नॉट अलाउड बोथ फॉर टेनेंट एज वेल एज योर ओनर. So now this must be clear for every student that a tenant need not do the capital repair. Obviously tenant कहीं पर भी नहीं करता है, but in most of the cases the owner has to do it, but it is not allowed in PGBP because जो भी खर्चा आपका आएगा capital repair कराने में, that will be added to the cost of the building in the balance sheet, राइट? और वहाँ से फिर वो डेप्रिसिएशन को लेस करना होगा और वो सब करना पड़ेगा. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अलाउड हियर, राइट? आई होप दिस इज़ क्लियर. और नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे
वो ये है कि whatever building or infrastructure we are talking about, it should be used for the purpose of carry forwarding your business or profession, right? Now, if you go by all your notes or even the bare act, then a word is mentioned that it is paid. Rent paid, rates paid, insurance paid. So what is the meaning of this paid? Paid का मतलब क्या होता है? It can either be on accrual basis or be on cash basis. It depends on the method of accounting which is being followed by the SSE. तो SSE मतलब यानी कि वो business company है या वो firm है या फिर वो individual है, वो जो भी kind of method of accounting follow करते हैं, it is based on that, right? So that was it for today, guys. Section 29 and section 30 we studied now. In the next class, we will study section 31. Okay. If you find this video useful, then please hit the bell icon and like the video, share it with your CMA final and CA final students. And also don't forget to subscribe to my channel, The Witty Turtle.